patriotism takes on a new flavor. And of course, celebrations come out in their entirety. हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी पर बहुत सर्दी होती है, लेकिन इस बार मौसम की बड़ी कृपा है कि न सिर्फ मौसम में ठंडक जरा कम हुई, उसके साथ साथ कोहरा धुंध बिल्कुल भी नहीं, धूप खिली हुई। जाड़ों में इससे बेहतर मौसम और क्या चाहिए। जिसे कहते हैं कि समारोह में 4 चांद लग गए सूरज की रोशनी से। Absolutely, and sometimes it is this paradox which gives real meaning to what we're trying to say. The citizens are brimming with pride and adoration, light up at the sight of Prime Minister Shri Narendra Modi. Their affection for him radiating like the sun illuminating in this clear blue sky. Their eyes sparkle with excitement, for today they stand not just as mere spectators, but as participants in a monumental celebration of democracy and national pride. In this vibrant tableau of humanity, the presence of our Prime Minister transforms the atmosphere into a festival of unity and camaraderie. As he engages with the jubilant crowd, each interaction feels significant. An affirmation of shared values and aspirations, and his approachable demeanor evokes a sense of belonging, making each individual feel seen and heard in this grand narrative of our nation. जितने भी इनक्लोजर्स हैं, सभी को ये उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय उनके बहुत करीब आएंगे और उन्हें अभिवादन करने का एनक्लोजर में मौजूद जो दर्शक हैं उन्हें अवसर मिलेगा और एक और उनके लिए और ज़्यादा यादगार ये बनेगा राष्ट्रीय पर्व का अवसर 76वां गणतंत्र दिवस। आप देख सकते हैं एनक्लोजर्स में देश के कोने कोने से पहुँचे जो भारत की विकास की यात्रा है उसके सारथी जिन्हें विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था, वे भी बहुत आह्लादित, बहुत प्रसन्न और उल्लसित महसूस कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अपने निकट पाकर। एनक्लोजर्स में जो दर्शक हैं उनमें ज़्यादातर के हाथों में उनको मोबाइल फ़ोन्स जिनका कैमरा मोड ऑन है, वो इन दृश्यों को, तस्वीरों को, इन पलों को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहते हैं, अपनी यादों में संजो लेना चाहते हैं। So well, it's become a tradition now. Wasn't earlier, but now is, and that's change. In fact, for any country on the move, the process of continuity, churn and change are the only constant. Paradoxically, that which has helped us grow in the past can actually limit our growth in the future. So the ability of governance to read the changing realities, to be able to initiate constructive change and yet to be anchored in the values of our Constitution, that is the engine of a democracy that powers growth with equity and progress, with inclusion. This day in 1950 was a historical landmark for a nascent democracy waiting to come into its own. And this day today in 2025 is yet another milestone, measuring and marking the progress made by an established democracy, India, having made a place for itself in the Comity of Nations. And though we do understand that we are work in progress, we have grown and strengthened our position as an intrinsically strong and stable economic and political entity. And keeping ourselves rooted in the values of equity, justice and fraternity, we continue to move forward, ensuring that the privileges of development percolate down to enable a better quality of life for every Indian. Democracy is what democracy does.
ये संतोष की घड़ी है। यह आश्वस्त करती है कि हमारी विकास यात्रा सही दिशा में चल रही है। गणतंत्र के 75 वर्षों के बाद हमारी उपलब्धियां हमारा गौरव है, लेकिन मन कहाँ मानता है। उसे तो मोर चाहिए, कुछ और चाहिए। कल्याण का मार्ग पूरा नहीं होता, नए लक्ष्य जुड़ते जाते हैं। ये लगातार चलने वाली यात्रा है। For the young hearts gathered here, this day is not just a fleeting moment, but a milestone they will cherish deep within their souls. The mere act of watching their own Prime Minister wave at them becomes a symbol of connection, a cherished memory that will be etched forever in their minds. The day when they stood alongside the leader of the masses, the man who champions their dreams and aspirations. The excitement in the air is infectious, a wave of positive energy sweeping through the crowd as they bask in the joy of this momentous occasion. 78वां